દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો સિટી ક્રાઇમ ન્યૂઝ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. ધ નેશનલ ફેડરેશન ઓફ ધ બ્લાઇન્ડ NFB ગુજરાત રાજ્ય શાખાએ તેના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી સંતોષકુમાર રૂંગટાના 71મા જન્મદિવસની ઉજવણી તેમના જીવન ચરિત્ર પુસ્તક અંતિમ જનતાકમાં વિમોચન સાથે ભવ્ય કાર્યક્રમ સાથે કરી. પ્રોફેસર કુસુમલતા મલિક દ્વારા આ કાર્યક્રમમાં નાનક સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ફોર ધ બ્લાઇન્ડ્સના 10 અંધ વ્યક્તિઓ અને ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન પણ સામેલ હતું. પુસ્તક અંતિમ જનતક શ્રી રૂંગટાની પ્રેરણાદાયી જીવનયાત્રાનું વર્ણન કરે છે, જે ભારતમાં દ્રષ્ટિહીન વ્યક્તિઓના સશક્તિકરણ માટે તેમના નોંધપાત્ર યોગદાન અને અવિરત પ્રયાસોને પ્રકાશિત કરે છે. પ્રોફેસર કુસુમલતા મલિક, જેમણે પુસ્તક લખ્યું હતું, લોન્ચ દરમિયાન શ્રી રૂંગટાના સમર્પણ અને દૂરંદેશી નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી હતી. પુસ્તક વિમોચન ઉપરાંત ઇવેન્ટમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપનાર 10 અંધ વ્યક્તિઓની સિદ્ધિઓને માન્યતા આપવામાં આવી હતી. તેની દ્રઢતા અને સિદ્ધિઓ દ્રષ્ટિહીન સમુદાય અને તેનાથી આગળના લોકો માટે પ્રેરણારૂપ છે. આ ઉજવણીમાં નાનક સેન્ટર ઓફ ધ એક્સલન્સ ફોર ધ બ્લાઇન્ડના વિદ્યાર્થીઓનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જે એક અનુકરણીય કાર્યક્રમ છે, જે દ્રષ્ટિહીન વ્યક્તિઓને કમ્પ્યુટર શિક્ષણ, અંગ્રેજી સાક્ષરતા અને અન્ય આવશ્યક કૌશલ્યો પ્રદાન કરે છે. આ કેન્દ્ર વિદ્યાર્થીઓને તેમના શૈક્ષણિક અને વ્યાવસાયિક ધ્યેયો હાંસલ કરવા, સ્વતંત્રતા અને આત્મનિર્ભરતાને ઉત્તેજન આપવા માટે સશક્તિકરણ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. શ્રી સંતોષકુમાર રૂંગટાએ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા બદલ NFB ગુજરાત રાજ્ય શાખાનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને દ્રષ્ટિહીન લોકોના ઉદ્દેશ્યને આગળ વધારવામાં સામેલ દરેક વ્યક્તિના સામૂહિક પ્રયાસોને બિરદાવ્યા હતા. તેમણે વધુ સમાવિષ્ટ સમાજ બનાવવાની દિશામાં કામ કરવાનું ચાલુ રાખવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. નેશનલ ફેડરેશન ઓફ ધ બ્લાઇન્ડ સમગ્ર ભારતમાં અંધ વ્યક્તિઓના અધિકારો અને કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સમર્પિત છે અને આ ઇવેન્ટ શિક્ષણ, સશક્તિકરણ અને શ્રેષ્ઠતાની માન્યતા પ્રત્યેની તેમની ચાલુ પ્રતિબદ્ધતાને રેખાંકિત કરે છે. રિપોર્ટર અભ્યોરા, સિટી ક્રાઇમ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. મારું નામ દેવ્યાની ઠાકોર છે અને હું નેશનલ ફેડરેશન ઓફ ધ બ્લાઇન્ડ ગુજરાત સ્ટેટ બ્રાન્ચની જનરલ સેક્રેટરી છું. જી, આજે અમારો કાર્યક્રમ છે દ્રષ્ટિહીન સન્માન સમારોહ, અખિલ ભારતીય દ્રષ્ટિહીન સન્માન સમારોહ. આજનો દિવસ એટલે અમારા રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિહીન સંઘના પ્રણેતા જે છે SK રૂંગટાજી, એમનો જન્મદિવસ. એમનો જન્મદિવસ દર વર્ષે અલગ અલગ રાજ્યમાં મનાવવામાં આવે છે, જેથી કરીને લોકો સુધી રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિહીન સંઘની સેવા પહોંચે અને દ્રષ્ટિહીન એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવે. ઉપરાંત એમના પુસ્તક વિમોચનનો કાર્યક્રમ હતો અને આ કાર્યક્રમ દ્વારા અમે દ્રષ્ટિહીનો સિવાય સમાજમાં એક જાગૃતિનું કાર્યક્રમ કરવા માટે કરીએ છીએ અને જાગૃતિ જગાવીએ છીએ. તેના કારણે આ કાર્યક્રમ આપણે ત્યાં આ વર્ષે સુરતમાં કરવામાં આવ્યો છે. अखिल भारतीय दृष्टिहीन सम्मान समारोह में आज जो पूरे भारत राष्ट्र से दृष्टिहीन लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसका जो प्रेसिडेंट है आदरणीय रूंगटा जी, जिनके आज जन्मदिन भी है, उनकी भी शुभेच्छा देता हूँ. और उसके साथ साथ पूरे दृष्टिहीन परिवार के लिए आदरणीय कुसुमलता मलिक जी ने अपने 10 साल अपनी पूरी मेहनत करके पूरे भारत राष्ट्र में इतने दृष्टिहीन लोग हैं, उनकी जो अनुभव गाथा है, उनका भी पुस्तक विमोचन किया. उसके लिए भी मैं सबको शुक्रिया कहता हूं. और अपने गुजरात राज्य की जो और सूरत की जो आदरणीय दिव्यानी बेन है, जिन्हें पूरा आयोजन किया है, उनको भी मैं शुक्रिया कहता हूं. और पूरे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एंड गुजरात स्टेट ब्रांच के सभी होद्देदारों को भी मैं, और पूरे सूरत महानगर पालिका और जो उनके सहयोगी हैं, उन सभी को मैं शुक्रिया कहता हूँ. वंदे मातरम, भारत माता, जय जय गुजरात. सर, दृष्टिहीन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दृष्टिहीन लोगों को यही संदेशा है कि ये जो हम दृष्टि वाले लोग हैं, उनसे ज़्यादा आप लोग ये पूरे, आपके पास जो कंठ है, आपके पास जो समझ है, आपके पास जो काम करने का तरीका है, और आप लोग ही ऐसे लोगों को जो दृष्टि वाले लोग हैं, उनको मार्गदर्शन करने के लिए सही आपको ही ज़रूरत है. सर, आज जो कार्यक्रम है, आज जो है ये हम और सभी लोगों के लिए किस तरीके से प्रेरणा रूप बना जा रहा है? ये पूरा दृष्टिहीन लोगों का जो आज कार्यक्रम है, जो रूंगटा जी का जन्मदिन है और पुस्तक का विमोचन है, तो जो जिसके पास दृष्टि है उसे यही उसको एक मैसेज देता हूँ कि हमें भी, जब दृष्टिहीन लोग ये पूरे इतनी सारी अच्छी अच्छी प्रवृत्तियाँ कर सकते हैं, आवाज़ से भी कर सकते हैं, सरस्वती माता की आराधना से भी कर सकते हैं, तो हमें तो दृष्टि है, तो हम उससे
3 गुना 10 गुना ज़्यादा ये सभी एक्टिविटी करनी चाहिए। जी, सर आपका नाम, आपके डेजिग्नेशन? मैं संतोष कुमार रुंगटा, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का राष्ट्रीय महासचिव, और मैं एक सीनियर एडवोकेट हूँ। सर ये आज ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है और इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है? आज का ये जो कार्यक्रम है ये सारा दृष्टिबाधित समाज सम्मान दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बैनर के तले मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अधिकारों की लड़ाई, अधिकारों को, दृष्टिबाधित और दिव्यांगों के अधिकारों को कानूनी मान्यता और उनके अधिकारों के लिए नीतियां, कार्यक्रमों, सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम जो सरकार से बनवाए गए, उसके कारण आज जो पहले 40-50 साल पहले जो परिवेश था वो बिल्कुल बदल गया है। पहले जहां दृष्टिबाधितों को समाज पर एक बोझ समझा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बैनर तले जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का परिणाम, चाहे न्यायिक संघर्ष हो, चाहे सड़क पर हुआ हो संघर्ष हो, चाहे संसद में अपनी आवाज़ उठवाने का प्रयास हो, उसके कारण जो बदलाव आया और कानून बने हम लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके कारण जहां एक और हमारा स्थान पहले जो मंदिर और आश्रमों में माना जाता था, आज हम प्रशासन के उच्चतर स्तर पर भी हमारे लोग IAS के पदों पर भी आसीन हैं। ये लंबे संघर्ष का परिणाम है और इसीलिए 17 मई को मेरे जन्म दिवस को पूरा दृष्टिबाधित समाज सम्मान दिवस के रूप में मनाता है, और जो स्नेह, प्यार, आस्था पूरे दृष्टिबाधित समाज के मेरे प्रति है, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। आज इस कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में एक पुस्तक का जो दृष्टिबाधित इतिहास, संघर्ष के इतिहास पर लिखी गई है प्रोफेसर कुसुमलता मलिक जी द्वारा, अंतिम जन तक, उस पुस्तक का विमोचन और लोकार्पण भी वाइस चांसलर साहब ने किया है, किशोर सिंह जी ने, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, उसके लिए हम उनका आभारी हैं। सर ये यहाँ क्या-क्या कार्यक्रम है जो दृष्टिहीन है, उन्होंने किस तरीके की सब प्रवृत्ति यहाँ की? देखिए, गुजरात में हम एक पिछले 2 साल से उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, नानक सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ द ब्लाइंड, जिसमें हम कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, उनको लैंग्वेज में कमांड उनका डेवलप करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करते हैं, और उसमें जो 40 छात्र लगभग 2 बैचों में निकले हैं पिछले 2 सालों में, उनको रोज़गार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रतिभाएं हैं दृष्टिबाधितों की, उनको मौका देकर उनको समाज और समाज के बीच उनकी प्रतिभाओं को लाकर समाज का जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, समाज अभी तक जो दृष्टिकोण है समाज का कि दृष्टिबाधित किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन, यूज़फुल कंट्रीब्यूशन राष्ट्र निर्माण में नहीं कर सकता, उसको बदलने का ये प्रयास है।